Starting with problem set 3, question number 13. Let's read out the question what it's given. It's given that line PR touches a circle at point Q, and using the information given in the figure, we need to answer some question. Let's say question number 1 is, we need to write the sum of angle TAQ and angle TSQ. ऐसे ऐसे ना और 4 क्वेश्चंस है, टोटल 5 क्वेश्चंस है। तो क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन जब आएगा ना तो एंगल को प्रेस्क्राइब नहीं, एंगल को एक एक एंगल को फोकस करके देखेंगे। अगर ये इस क्वेश्चन में एंगल TAQ और TSQ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो उसी को ध्यान से देखेंगे। उससे क्या होगा, अब हमने जो भी थ्योरम्स पढ़े हैं, अब तक जितने भी डिटेल में इंफॉर्मेशन पढ़े हैं वो हम इजीली अप्लाई कर पाएंगे इस क्वेश्चन पे। समझ में आ रहा है? So let's see angle TAQ angle TSQ only. क्या दिख रहा है मुझे quadrilateral दिख रहा है and the vertices of the quadrilateral are on the circle. मतलब vertex T, vertex A, vertex Q and vertex S of the quadrilateral are on the circle. तो मैं क्या बोल सकता हूँ, this quadrilateral TAQS is a cyclic quadrilateral. And if this quadrilateral TAQS is a cyclic quadrilateral, what can I say? Opposite angle of a cyclic quadrilaterals are supplementary. तो क्या मैं बोल सकता हूँ, angle TAQ plus angle TSQ is equals to 180 degree. हाँ, क्यों? क्योंकि angle TAQ और angle TSQ is nothing but the opposite angles of a cyclic quadrilateral, and I know that opposite angle of a cyclic quadrilateral are supplementary by cyclic quadrilateral theorem. Okay, आगे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको, सब क्वेश्चन 2। सब क्वेश्चन 2 में ये दिया हुआ है, we need to write the names of the congruent angle to angle AQP। मतलब एंगल AQP को इस फिगर में कौन-कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट है वो हमें लिखना है। अब एंगल AQP को इस फिगर में कौन-कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट है, लेट्स चेक। ओके, कैसे लिखेंगे, ये एंगल AQP है, PR is a tangent touching the circle at point Q, and from that point of contact a chord is drawn, then the angle which the chord makes with the given line is equal to the angle in the alternate segment। समझ में आया आपको? एक और चीज ध्यान दो, मैं इसको अवॉइड कर रहा हूं, ध्यान दो, सेम पढ़ना एक और बात देखो, ध्यान दो। PR is a tangent at point Q, and from that point Q a chord is drawn, then the angle which the chord makes with the given line is equal to the angle in the alternate segment। ध्यान दो, angle ATQ is also alternate to angle AQP, and angle ASQ is also in the alternate segment to angle AQP। So मैं क्या लिख सकता हूँ, AQP का कॉमन कॉम्पोनेंट है, एंगल AQP को पहले तो कॉम्पोनेंट है एंगल ATQ, और फिर एंगल AQP को कौन-कौन कॉम्पोनेंट है, ASQ, marking this as 1 and marking this as 2 by angles in alternate segment। Okay, now, okay, wiping it all, दो हो गया, ठीक है, यहाँ तक हुआ, ठीक है। ओके, अब आगे सब क्वेश्चन 3 क्या बोलता है, सब क्वेश्चन 3 बोलता है, write the names of the angle congruent to angle QTS। okay, write the names of the angle congruent to angle QTS। अच्छा, QTS ध्यान से देखो, QTS है क्या भाई, QTS है क्या, ये QTS है। तो अब ना मैं आपको ना 80 वाला 80 डिलीट करता हूँ, ठीक है, सेगमेंट 80 कुछ देर के लिए मैं हटाता हूँ। मुझे क्या लिखना है, ध्यान दो, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम corollary to क्या बोलता है, angles in the same arc, angles subtended in the same arc are congruent। समझ में आया?
angle subtended in the same arc are congruent. So I can say that, पहले तो ये बोल देता हूं मैं कि angle QTS is congruent to angle QAS. Angle QAS. Angle inscribed in the same arc. Angle inscribed in the same arc. Okay, that is, the angles are congruent. So I can say that angle QAS is congruent to angle QTS. दिख रहा है आपको, ये angle और ये angle congruent है. Angle inscribed in the same arc. That is, inscribed angle theorem का corollary 2 है. और क्या बोल सकता QTS इसको congruent है? अच्छा ध्यान दो फिर से. A tangent line drawn with a circle at point Q, and from that point of contact draws chord, then the angle which the chord makes with the given line is equal to the angle in the alternate segment. समझ में आया आपको? समझ में आ रहा है? ये एक सेगमेंट हो गया R1 लेट्स से, और ये R2 हो गया फिलहाल के लिए. समझ में आया आपको? तो फिर से बताता हूँ. A tangent line drawn to the circle at point Q, and from that point of contact a chord is drawn, then the angle which the chord makes with the given line is equal to the angle in the alternate segment. So I can say that angle QTS is congruent to angle QSQR और RQS. समझ में आया? By the theorem, wait, a tangent line drawn at a point Q, and from that point of contact a chord is drawn. The angle the chord makes with the given line is equal to the angles in the alternate segment. That is, angles in alternate segment. Done. Okay, तो QTS का भी हो गया. Okay, now let's फिगर पे आते हैं. क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? अब क्वेश्चन दिया हुआ है angle TAS is 65 degree. 65 है. And we need to find angle TQS and measure arc TS. ध्यान दो. मैं ना अभी AQ को हटाता हूँ फिगर से. ओके, AQ हो गया. कोई ना. अब क्या बोल रहा हूँ? Angle TAS is 65 degree. I need to find angle TQS and measure arc TS. यार फिर से यार, inscribed angle theorem का corollary 2. ध्यान दो, वही है. Angle inscribed in the same arc are congruent. So अगर ये 65 है तो ये भी कितना होगा? 65. My angle inscribed in the same arc are congruent. So I can write, पहले तो लिख दूंगा angle 4. Angle TQS is equals to 65 degree. Okay, क्योंकि मुझे पता है angle TAS is congruent to angle TQS. यहाँ लिख दूंगा by the reason angle TAS is congruent to angle TQS. Okay, hence angle TQS is equal to 65 degree because TAS is equal to 65 degree given, दिया हुआ. अब क्या दिखता है? अगर TS RQTS को देखूं तो ध्यान दो, RTS को देखो तो क्या दिखता है मुझे? क्या मुझे एंगल TQS एक इंस्क्राइब्ड एंगल दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, because the vertex lies on the circle and the two arms behave as secant. तो क्या अगर ये मुझे इंस्क्राइब्ड एंगल दिख रहा है तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ एंगल TQS is an inscribed angle? और अगर ये इंस्क्राइब्ड एंगल है तो क्या मैं इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ. What is inscribed angle theorem? Measure angle TQS is equals to half of measure arc TS. That is inscribed angle theorem. समझ में आया आपको? अब measure angle TQS क्या है? 65 degree is equals to half of measure arc TS. तो ये 2 यहाँ डिवीजन में बॉर्डर क्रॉस करेगा मल्टीप्लिकेशन और हमें मिलेगा measure arc TS is equals to
130 degree. तो मुझे मिल गया measured angle TQS is 65 degree and measured arc TS is 130 degree respectively. समझ में आया? Now the last question and the best question. Let me wipe out all this. मैं इसको wipe कर रहा हूँ. क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ? मैं नहीं wipe कर रहा हूँ. यहाँ लिखता हूँ. Question number 5 को मैं यहाँ solve करता हूँ. Angle AQP is 42 degree. Angle SQR is 58 degree. We need to find angle ATS. अरे यार ये क्या हो गया? चलो एक ही करते हैं. पहले AQP दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है मैं देखता हूँ. 42 degree. ओके ठीक है. चलो. अब angle AQP. ओके. क्या दिख रहा है मुझे? ध्यान दो. This PR is a tangent at point Q, and from that point of contact, a chord is drawn. The angle which the chord makes with the given line is equal to the angle in the alternate segment. Okay, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? This is 42 degree. This is also 42 degree. Okay now. अब SQR के बारे में बात करते हैं. Let's talk about SQR. Okay, क्या दिख रहा है मुझे? This PR is a line tangent to the circle at point Q, and from that point of contact a chord is drawn. The angle which the chord makes with the given line is equal to the angle in the alternate segment. That is, if this is 58 degree, this will be 58 degree. Okay. समझ में आया आपको? Reason, angles in alternate segment. क्या मैं बोल सकता हूँ? मैं लिखता हूँ. यहाँ तो मैं लिखा हूँ. क्या लिखा हूँ? Angle AQP is equal to angle ATQ is equal to 42 degree. Reason, angle in alternate segment. समझ में आया? अब दूसरा मैं क्या लिख रहा हूँ? Angle SQR is equal to angle QTS is equals to 58 degree. Angles in alternate segment. आप ऊपर से भी ले सकते हो. ऊपर में दिया हुआ SQR is equal to QTS and AQP is equals to ATQ. अगर आप इसको 1 मार्क करते हो और इसको आप 2 ना, तो ये 3 और ये 4 मार्क कर सकते हो, तो आप 1 और 4 से भी ले सकते हो, या आप एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट भी ले सकते हो. ये ऑब्वियस. ठीक है. अब आगे ये 42 डिग्री है, 58 डिग्री है. अब मुझे ना, मेरा मकसद ना ATS फाइंड आउट करना है. ATS क्या है बेटा? ATS नथिंग बट एंगल ATQ प्लस एंगल QTS इज नथिंग बट एंगल ATS. लिख के बताता हूं मैं आपको. एंगल ATS is nothing but angle ATQ plus angle QTS. That is angle addition property. Okay. That is ATS is equals to ATQ कितना है? It's 42 plus 58. That is nothing but 100 degree. तो एंगल ATS कितना हो जाएगा मेरा? 100 degree. समझ में आया आपको? So I got all the answers of the 5 questions. Question number 1, question number 2, 3, 4 and 5. It's done. Okay. So this was the solution of the given 5 questions. Let me show you the representation in the exams. Okay. Wiping out all this. Everyone look. Have a look at this. Okay. Cyclic quadrilateral theorem. Angles in alternate segment. Yeah. What is this? QTS is equal to QS, QTS and QS. Angles inscribed in the same arc are congruent. And what is this? Angles in alternate segment. And then TQ is equal to 65. Then TS also is 65 because angle in the same arc, angle inscribed in the same arc, and hence this angle addition property and angles in alternate segment. Everything is done. Okay. Now I can get out. So
These are the 5 questions we need to give answers of. So TAQ is a cyclic quadrilateral. TEQ plus TSQ is equal to 180 degrees, cyclic quadrilateral theorem. ATQ is common to AQP, angles in alternate segment. ASQ is common to AQP, angles in alternate segment. QS is common to QTS, angle inscribed in the same arc. RQS is common to QTS, angles in alternate segment. Okay. Fourth one, it's TQS is equal to TS, angle inscribed in the same arc. So TS will be 65 degrees. So TQS will also be 65 degrees. And TQS is equal to half of measure at TS, angle inscribed angle theorem, where we got the measure at TS equals 65 into 2. So measure at TS is equals to 130 degree. So fifth, okay, now AQP is equal to 40 degree, SQ is equal to 58 degree. Then find ATS. So we know that ATQ is congruent to AQP, angles in alternate segment. ATP is equal to 42, and STQ is equal to is congruent to SQR, angles in alternate segment, and STQ is equal to 58 degree. And we know that ATS is nothing but, and by angle addition property, this is not congruent. This is equal to, okay, equal to angle ATQ plus angle STQ, angle addition property. We got ATS is equal to 42 plus 50, that is nothing but 100 degree. So we got all the 5 questions answered. And if you like this video, do share and subscribe. Thank you.